Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा, तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, so that I know you all are with me live in the session. Ramkrishnan ji, good afternoon. Balbir ji, good afternoon. Sachin ji, hello and visible. Perfect. Shrikant ji, good afternoon. Sridhar ji, good afternoon to you as well. Audible. Parmeshwaran ji, Shri Krishna ji, good afternoon. Great guys. Vinay ji, good afternoon. Ames ji, good afternoon to you as well. Okay, we'll just wait for a few more seconds and then we should be good to go with today's live. Okay. हम डिस्कस करते हैं Q&A. संजीव जी टुवर्ड्स द एंड लेंगे. So 1 to 1:15 is where I will take your question and answer, because if I start with Q&A तो फिर वो पूरा flow बिगड़ जाएगा. So we have a dedicated session. Or first we'll complete the mid market and then आपका जो queries है आप मुझे बाद में पूछ सकते हो, and then I'll try to answer them. Okay, Joyce Sarkar ji, good afternoon. Okay, great. So now let us start off with our mid-market session. So yesterday the US markets were closed. I think कल उनके वहाँ प्रेसिडेंट डे था, तो US markets बंद था कल के सेशन में. So no action as far as the US markets are concerned. Dow futures right now it's down around 0.28%, so we can expect a slight flat to negative start to the US markets today. If we look at the European markets, Germany is down 0.46%. London is down 0.26%. France is up 0.06%. France, you're aware, Emmanuel Macron is in Mumbai later, scheduled to visit Delhi as well. So he'll be meeting the Prime Minister, and there are some defense deals, that is likely to take place. I think we are going to buy more of Rafale fighter jets. I think that is one of the reasons why some of the defense stocks are also up in today's session. Cochin Shipyard, for that matter, it was the lowest bidder for one of the contracts. I think that is the reason why Cochin Shipyard is up. But structurally, I feel still nothing has changed for the defense space. It's just that there are some deals that are likely to be announced, so we'll have to wait and watch for the announcement and the likely impact that it could have on the defense space. If you look at Euro Stocks 50, that is down around 0.4%. But if you look at the Asian markets are relatively mixed. Hang Seng की बात करें तो वो 0.5% ऊपर है. Nikkei में आज profit booking है 0.5% का. China is down around 1.26%. Kospi में भी थोड़ा सा profit booking है 0.28% lower. Nifty and Sensex, I think another day, yesterday we had a strong recovery, though हम थोड़ा सा ऊपर है, but still I feel वो जो हम इंट्राडे में जो मूवमेंट चाहते हैं वो अभी तक हमें देखने नहीं मिला है सेंसेक्स और निफ्टी में. So Nifty is up 0.2%, Sensex is up 0.3% at the current juncture. If you look at and अगर हम देखेंगे, so again Kospi for the last 1 month it continues to be the best performing global index, that is up around 13%. Nifty is flat. We are just above the 0% mark, that is 0.06. So I think last 1 month अभी भी Nifty भले ही हम थोड़ा सा एक रिकवरी आया था बजट के बाद, इंडिया यूएस डील के बाद, बट वो जो मोमेंटम चाहिए था मार्केट्स के लिए वो अब तक नहीं आया है. Now if you look at the macro indicators, dollar index की बात करें, so dollar index has been consolidating in a range. ऊपर की तरफ 97 का एक रेंज है, नीचे की तरफ almost 96. It has been moving in this range since the last 4-5 trading sessions now. तो जब तक ये 20-day EMA के ऊपर नहीं जाता, that is somewhere around 97.5. Till the time dollar index is below this level, the overall trend is likely to remain bearish.
Importantly, I feel a lot of them are pumping money in US bonds. इसके लिए आप देखोगे yields almost लगातार गिर रहा है US गवर्नमेंट bonds का. Almost अगर इसका देखोगे तो previous support is now somewhere in this zone around 3.96 zone. We are at 4% now. Almost एक टाइम में हमने यहाँ पे 4.3% का हाई हिट किया था and we have gone down to 4.02. यूजली यील्ड्स तब गिरता है जब बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं. बॉन्ड प्राइसेस ऊपर तब जाते हैं जब बॉन्ड का डिमांड ज्यादा होता है. So bond prices go up, and when bond prices go up, yields usually fall. So yields and bond prices का inverse correlation होता है. So I think a lot of US government bonds purchase is going on, because of which we are seeing this cool off in the US government bonds yields. Japanese 10-year yields की बात करें तो उसमें भी काफी cool off नजर आ रहा है. So I feel a lot of money is probably moving to Japanese bonds as well. So I think Japanese 10-year yields is down around 3%. So I think yields cooling off is again very good sign for the equity markets. And even if you look at Indian 10-year yields, even that is going down. It's down 0.3%. So US yields, Japanese yields, Indian yields, all three yields are falling, which in fact it's a good sign for equity markets going forward. Because agar yields drop hote hai, so your equity market becomes attractive at that point. If you look at dollar by rupee, we are still at 90.77. So $1 is 90.77. It's still at the elevated levels. शायद ये कारण हो सकता है कि FIIs अब तक हमारे मार्केट्स में प्रवेश नहीं किए. But I feel we need to go below the 90 mark, maybe move towards 88, 87. That is the kind of dollar weakening is what we want. I think any move below 90 is likely to be positive for our markets. If you look at crude oil, so crude oil largely has been consolidating in a range. अगर आप देखोगे नीचे की तरफ $65, ऊपर की तरफ $70. So $65 to $70 a barrel is where the crude oil prices have been trading in. I think if we go below 65, good sign for us. For an oil importing country like India, a lower crude oil prices always helps. Now that we'll be probably buying a lot of oil from US and a lot of Venezuelan oil as well, and probably stop buying oil from Russia. So the invoicing for crude is done in dollars. So अगर crude का भाव बढ़ता है तो indirectly आपका dollar का भी demand बढ़ जाता है. And a higher dollar again, it leads to higher foreign exchange reserves. So आपका foreign exchange reserves कम होता है, जिसके कारण आपको market में pressure दिखता है. But for now, I think crude oil prices are in a range. Probably any move above $70 a barrel, that could take the prices towards $75 a barrel in the short term. India VIX, nothing significant. We are down around 4%. We could see a recovery coming in Nifty and Bank Nifty today. But nevertheless, VIX जब भी cool off होता है, that gives a lot of comfort to the bulls. So again, majorly nothing much to worry as far as the volatility is concerned. यहाँ पे एक rise हुआ था, but then we are still, I think, as long as we don't breach that 16 mark, I think 16 is where the resistance is. We hit that 16 during the budget. So as long as we are below this mark, I mean, the volatility will be under control. If you look at silver, so silver में थोड़ा सा pressure है. I would say between gold and silver, gold is looking attractive as compared to silver here. But I think avoid gold and silver for now. Maybe for अगर एकदम long term perspectives है, probably you can keep your SIPs on for gold. But for silver, I think wait for silver to cross $90 an ounce mark, because जब तक ये $90 an ounce के नीचे रहता है, तब तक the overall trend is likely to remain bearish in silver. And if you look at gold, so gold also has been consolidating in a range, I think 4,800 on the downside and around 5,100. So I think any move above $5,100 an ounce, I mean, that could push the gold prices higher. So as far as the macro indicators are concerned, I feel one good positive is that the yields of US, Japan and China, and India, they are all down at the current level. If you look at the FI positioning, तो यहाँ पे थोड़ा सा sentiment फिर से shift हो गया FIs की तरफ से. हमने देखा FIs ने पिछले 5 सेशंस में
ऑलमोस्ट 5,327 करोड़ का यहाँ पे बाइंग किया था उन्होंने। बट पिछले 2 दिन का अगर आप फिगर देखोगे तो दे हैव सोल्ड अराउंड 8,367 करोड़, और उसमें से 7,400 करोड़ लगभग उन्होंने 13 फरवरी को बेचा था। सो क्लियरली ऐसे लग रहा था कि धीरे 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 आई थिंक एफआईआईज अपने होप्स बढ़ा रहे थे कि अब आएंगे मार्केट्स में, अब इंडिया यूएस डील हो गया, अब चलो धीरे धीरे। उन्होंने शॉर्ट कवरिंग भी किया, यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो 11% था वो बढ़कर 22% तक आ गया था। तो हमें लग रहा था कि शायद अब एफआईआईज इंडियन मार्केट्स में आएंगे। बट पिछले 2 दिन का सेलिंग फिगर देख के अब लग गया है कि एफआईआईज अभी भी एक वेट एंड वॉच अप्रोच में है। अभी भी उनका वो कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा है उनके, बिकॉज अगर कन्विक्शन होता तो ये बाई फिगर्स इंक्रीज होता और कंसिस्टेंटली ये बढ़ते जाता। बट इतना अच्छा बाइंग फिगर आने के बाद फिर से एक 7,000 करोड़ का सेलिंग आना एक ही दिन में, आई थिंक दैट अगेन काइंड ऑफ मेक्स यू वंडर इफ एफआईआईज आर रियली बैक इन द इंडियन मार्केट्स और नो। फिलहाल के लिए तो लग नहीं रहा है, मे बी धीरे धीरे वो एक वेट एंड वॉच अप्रोच ले रहे हैं, बिकॉज अभी भी देर इज, आई वुड से भले ही वो एक इंटरिम डील आया हुआ है, बट अभी भी थोड़ा सा लॉट ऑफ एरियाज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। आई थिंक इसके कारण शायद एफआईआईज अभी भी एक वेट एंड वॉच मोड पर है। नाउ टॉकिंग अबाउट निफ्टी, अभी हम लेवल्स की बात करते हैं। सो निफ्टी में हमने यही देखा कल, अगर आपको याद है, हमने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखा था और हमने एक रेजिस्टेंस मार्क किया था। मैंने आपको बोला था अगर ये रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो हो सकता है ये जो गैप है वो फिल हो जाए। आई थिंक निफ्टी शायद आज वही कर रहा है। आई थिंक ये जो गैप है वो 25,780 या 25,800 लेवल तक है ये गैप, और अभी ऑलमोस्ट 25,730 है। तो हो सकता है शायद निफ्टी और एक 30-50 पॉइंट्स ऊपर की तरफ जाए और ये पूरा गैप फिल कर दे। एक अच्छा रिकवरी आया, अगर आप देखोगे वी स्टार्टेड ऑफ ऑन स्लाइट वीकर नोट, और फिर वहां से ही एक आई वोंट से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, बट एक स्टेडी रिकवरी हम बोल सकते हैं कि बायर्स हैव बीन स्लाइटली डोमिनेंट ओवर दी सेलर्स टुडे। अभी भी ये पूरा गैप फिल नहीं हुआ। आई थिंक 25,790 के आसपास वो लेवल में आपका ये गैप फिल हो जाएगा। बट जिस वे से निफ्टी आज मूव हो रहा है, हो सकता है शायद ये पूरा गैप फिल हो जाए। एंड निफ्टी ऐसे ही एक, अगर आप देखोगे, एक हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन से ये मूव होते हुए जा रहा है। सो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली शिफ्ट योर सपोर्ट हायर। आई थिंक ये जो प्रीवियस लो है मे बी इसके थोड़ा सा ऊपर रख सकते, मे बी अराउंड 25,650 के आसपास यू कैन trail your support, and on the higher side I think ये गैप फिल होना इंपॉर्टेंट होगा टुवर्ड्स 25,790। अगर हम 25,790 के भी ऊपर जाते हैं तो आई फील द नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस वुड बी समवेयर अबाउट 25,880, और सो आई थिंक प्रॉब्ली एक 100 पॉइंट्स का मूव आ सकता है वंस दिस गैप इज फिल्ड ऑन द अपसाइड। ऑन द डाउन साइड you can keep trailing your support higher. For now I think it is around 25,650, 25,660. That is where the support is placed for Nifty. अगर आप देखोगे कल एक स्ट्रॉन्ग एक एनगल्फिंग कैंडल जैसे बना था, और आज हम कल के हाई के भी ऊपर चले गए, तो ये ऑलमोस्ट एक गैप फिल होते हुए नजर आ रहा है, विच इज एक्चुअली अ गुड साइन। इनफैक्ट इस दिन हम 20, 50 और 100 डे ये में के नीचे आ गए थे। कल हमने फिर से जल्दी रिक्लेम कर लिया था। जब भी हम एक कोई की एवरेज टूटता है और फिर से अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स उसको जल्द से रिक्लेम कर लेता है, दैट मीन्स वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जाता है। और आज हम कल के हाई के ऊपर है, जो काफी पॉजिटिव है। आई थिंक 25,900, 25 वेयर इज दैट, हाँ 25,790, दैट इज वेयर द रेजिस्टेंस इज। अगर हम वो पार कर देते देन हो सकता है शायद निफ्टी कैन कंटिन्यू मूविंग हायर फ्रॉम द करंट लेवल्स हियर। If you look at Sensex almost similar story है, but Sensex ने अगर आप देखोगे almost ये गैप फिल ही कर दिया है। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट एट द लेवल यार। Sensex ने पूरा ये जो गैप था धीरे धीरे करके आज के सेशन में ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। और अगर आप देखोगे ये जो गैप फिल होते ही एक हेजिटेशन दिख रहा है यहाँ पे Sensex में। आई थिंक ये हेजिटेशन जब भी एक की रेजिस्टेंस लेवल के आसपास एक हेजिटेशन होता है एक 15-30 मिनट के लिए, यूजली जब बायर्स एंड सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड है, तो देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट कौन सी तरफ आता है। तो अगर सेंसेक्स में मान लो ये 83,590, 83,600 अगर एक बायर यहाँ पे ओवर पार करते सेलर्स को और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, then chances are that Sensex can keep moving higher on an intraday basis, and maybe you can also shift the support higher
आई थिंक मे बी समवेयर अराउंड 83-350 के आसपास आप आपका सपोर्ट शिफ्ट कर सकते हो। एंड इवन सेंसेक्स एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। सो अगर हम डेली चार्ट देखें, सो कल अगर आप देखोगे अगेन एक एनगल्फिंग कैंडल बना था एट इट्स 200 डे ए में, एक की लेवल में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन बनना, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और आज हम कल के हाई के ऊपर है, ऑलमोस्ट कल का ये जो गैप है वो पूरा फिल हो गया है। एंड आई थिंक अगर वो गैप फिल होता है, अगर फिर से अगर हम वो ये लेवल के ऊपर जाते हैं, आई थिंक देन हाई चांसेस आर दैट सेंसेक्स कैन लाइकली मूव हायर फ्रॉम द करंट लेवल्स। Now talking about बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी अगेन पॉजिटिव। बैंक निफ्टी में भी एक एनगल्फिंग कैंडल ही दिखा था, वो जैसे सेंसेक्स में 200 डे ईएमए के आसपास आया था, वैसे ही बैंक निफ्टी में 20 डे ईएमए के आसपास से आया था। और बैंक निफ्टी भी कल का जो हाई है वो उसी हाई के ऊपर चल रहा है। तो अगर हम 5 मिनट्स चार्ट देखें बैंक निफ्टी का, सो भले ही इनिशियल एक थोड़ा सा वीकनेस था बैंक निफ्टी में, बट बैंक निफ्टी वाज क्विक टू रिकवर। और बैंक निफ्टी भी एक स्टेडी अपमूव दिखा है। इनिशियल फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था, भले ही हम ऊपर है, बट अभी आप देखो कैंडल्स एकदम छोटे 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 और रेंज में बनते जा रहे हैं। भले ही ऊपर है, स्ट्रेंथ है, बट मोमेंटम थोड़ा सा कमी है। नेवरदलेस आज पीएसयू बैंक्स एक्शन में, मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है आज पीएसयू बैंक्स ऊपर है। बट आई थिंक bank nifty also you can kind of trail your support kind of higher, maybe towards 61,030 61,050 के आसपास आप सपोर्ट रख सकते हो। या मे बी आप एक ऐसा ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो कि जब तक ये ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट करता है बैंक निफ्टी, तब तक द ओवरऑल इंट्राडे ट्रेंड इज लाइकली टू रिमेन पॉजिटिव। मे बी अगर आप देखोगे आरएसआई भी थोड़ा सा फ्लैट हो गया इंट्राडे में, बट अगर हम मान लो 61,050 61,000 के नीचे जाते हैं तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इंट्राडे में। बट आई डोंट थिंक एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग आए अनलेस समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैपेंस इन द सेकंड हाफ ईयर। तो ये हो गया आपके इंडेक्स के लेवल्स। अब हम बात करते हैं सेक्टर्स के बारे में। सो आप क्लियरली देखो आज पीएसयू बैंक्स जो कि वीकनिंग क्वाड्रेंट में था, कल के सेशन में हमने देखा था पीएसयू बैंक्स वाज इन द वीकनिंग क्वाड्रेंट, नाउ इट हैज मूव्ड टू द लीडिंग क्वाड्रेंट हियर। सो अगर पीएसयू बैंक ने रिसेंटली एक ऑल टाइम हाई भी हिट किया था, सो अगेन यहाँ पे मोमेंटम की कमी थी पीएसयू में, बट अभी स्ट्रेंथ भी आ गया है और मोमेंटम भी आ गया है पीएसयू बैंक। सो पीएसयू बैंक्स यू कैन कीप देम इन योर रेडार। प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो अभी भी प्राइवेट बैंक्स वीकनिंग क्वाड्रेंट में है। सो बिटवीन प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक्स योर आई थिंक फोकस कैन बी ऑन पीएसयूज। फाइनेंशियल सर्विसेज इज इन द लीडिंग क्वाड्रेंट, सो वो एक सेक्टर है जो अच्छा कर सकता है। दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो भी एक लीडिंग क्वाड्रेंट में है, सो आई थिंक योर फोकस कैन बी ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एज वेल। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, भले ही वो लीडिंग क्वाड्रेंट में है, यू कैन सी सम प्रॉफिट बुकिंग। और ऑयल एंड गैस नीचे की तरफ है, अवॉइड करना। एनर्जी नीचे की तरफ है, इसको भी अवॉइड करना। मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो वन सेक्टर, ऑलमोस्ट फ्लैट है यहाँ पे। अगर आप देखोगे हेल्थ केयर फार्मा अभी भी इंप्रूविंग क्वाड्रेंट में, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द लीडिंग क्वाड्रेंट हियर। Auto again, there are some pockets of auto space that are doing well. So auto, infra, manufacturing, financial services and PSU banks in particular, I feel ये सारे sectors में से I think PSU banks that is probably one sector that can probably do well in the coming sessions. Now talking about the stocks to watch, हमने यहाँ पे ये देख लिया है आपका सेक्टर्स। नाउ अगर हम देखेंगे ये सेक्टर्स में पॉजिटिव प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर कौन सा है, लाइक आई सेड पीएसयू बैंक्स कंटिन्यूज टू डू वेल। अगर हम पीएसयू बैंक बाय निफ्टी की रेशियो चार्ट यहाँ पे देखते हैं, सो द रेशियो लाइन इज इन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, जो क्लियरली बताता है दैट पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं निफ्टी को। Now if you look at couple of stocks, one would be Bank of Baroda. अगर हम Bank of Baroda की बात करें, so Bank of Baroda एक almost it was moving in a sideways range, so almost 295 on the upside, 282 on the downside, and आज एक strong breakout मिला है Bank of Baroda में। RSI is almost nearing the 60 mark. DI plus has crossed over DI minus in the ADX indicator,
and MACD has also crossed over the signal line. So as long as Bank of Baroda stays above the 290, 292 mark, the overall trend is likely to remain bullish. Apart from that, Union Bank, I feel Union Bank is might do well in the coming sessions, because अगर आप Union Bank देखोगे तो एक strong पोल है, ये आपका फ्लैग है, और एक आपका फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट पैटर्न भी आपको नजर आ रहा है यूनियन बैंक में. ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था 182 के आसपास, और फाइनली यूनियन बैंक वाज एबल टू ब्रेक अबाउट दिस लेवल. And जब तक यूनियन बैंक इज अबाउ 178 179, I feel the overall trend is likely to remain positive for Union Bank. I feel Union Bank probably शायद next 2-3 दिन में, I mean, as a not a direct recommendation, but I feel इसका chart structure काफी अच्छा है, and it can do well as long as it stays above the 178 179 mark. Apart from that, IndusInd Bank is also one bank शायद काफी अच्छा कर सकता है, because अगर आप देखोगे ये अभी भी एक रेजिस्टेंस के आसपास है 955. From the lows, the stock has seen a steady recovery. बीच में 2 बार अपने 200 डे ये में तक आ गए थे, वहां से भी एक स्टेडी रिकवरी देखा गया था हमने. But I think if we get a strong close above 955 960, then chances are that even IndusInd Bank is likely to do well. But it should not break below the 920 mark, because any break below 920, that can probably derail the sentiment that we are seeing in IndusInd Bank here. The next bank that I want to talk about is IDBI Bank. अगर हम IDBI बात करें, so IDBI also, since taking support from the 200 day EMA, it has been steadily moving up. आज ये जो पिछले 4-5 दिन का कंसोलिडेशन फेज था, वहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था, भले ही हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है. But if IDBI Bank is able to sustain above 114 116, then chances are that even IDBI Bank can do well, with around 108 acting as a strong support. So as long as IDBI is able to hold above 108, the overall trend is likely to remain positive. Apart from that, like I said, another sector that is also in the leading quadrant, that is your consumer durables. So consumer durables भी एक ऐसा sector है जो शायद आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है. A couple of names from the consumer durable space. One would be Amber. अगर हम Amber Enterprises देखें तो already एक sharp rally हमने देखा है Amber में. Almost 5,400 से स्टॉक 7,760 तक पहुंच गया था. अब क्या नजर आ रही है ना, तो अगर आप अंबर में देखोगे तो पिछले 3-4 दिनों से अंबर इज इन साइडवेज ट्रेंड. मतलब एक छोटे छोटे कैंडल्स बनते जा रहे हैं. सो नीचे 7,620 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर 7,900 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. तो मतलब थोड़ा सा ब्रीदर लेते हुए नजर आ रहा है स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद, जो कि अक्सर होता है कि एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद यूजुअली वन वे नहीं जाता है, थोड़ा सा साइडवेज फेस आता ही है. बट अगर ये मान लो ये आपका 7,900 के ऊपर ब्रेकआउट देता है फिर से, तो ये कंटिन्यू कर सकता है अपना अपमूव, एंड प्रॉब्ली ये जो इसके जो प्रीवियस हाइज है टुवर्ड्स 8,500 8,550, वो लेवल तक टेस्ट करने की संभावना रखता है. बट फॉर दैट इट शुडंट ब्रेक बिलो 7,650. अगर ये 7,650 के नीचे आए तो फिर से थोड़ा सा it can give up on some of the gains that it has kind of made here. Apart from that, Crompton. So Crompton ने I think we have discussed this, एक downward sloping trend line breakout है. वहाँ पे breakout के बाद 2-3 दिन consolidation phase में था, फिर से एक follow through move नजर आ रहा है. So I feel as long as Crompton is able to hold above this level, that is 260, chances are that it is likely to keep moving higher. But अगर 260 के नीचे जाता है, then I think next support will be around 245, but below 245 it will probably lose all its momentum. So it's very important for Crompton to stay above 260. Then I think the next particular, I think इसमें Bollinger Bands use करना काफी important बन जाएगा, because अगर आप देखोगे कोरोमंडल काफी एक टाइट रेंज में मूव हो रहा था. अगर आप देखोगे यही से ऑलमोस्ट फ्रॉम the start of 2026 एक टाइट रेंज में मूव हो रहा था. और अगर आप देखोगे Bollinger Bands that was also contracting, and आज हमें एक फाइनली बैंड्स थोड़ा वाइडन होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे. और we have
seen, I mean, we are seeing a strong breakout of this consolidation phase here with RSI moving above 60 and DI plus crossing over DI minus with MACD also above the signal line here. So I feel 2300 is likely to act as a strong support for Coromandel, and as long as Coromandel stays above this level, the overall trend likely remains positive, and I think it can move towards 2420, 2450 levels in the short term. And the last stock that I want to discuss is Rallis India. अगर हम Rallis देखें तो ये भी एक लोअर लेवल से पुल बैक आया था यहाँ पे. So almost around 220, 224 say we saw pullback and then it went into a sideways space here. And फिर से I think the stock is trying to move out of that consolidation phase. It is now at 295. I think as long as it stays about 280 to 85 level, the overall trend is likely to remain positive in Rallis India as well. So that was about today's mid market. Now coming to the second last session of the day before I take your question and answer. So we'll again continue with that fundamental thing. I hope आप लोग stocks ढूंढ रहे हो fundamental के हिसाब से. आज हम एक चीज जानेंगे. आपने सुना होगा एक चीज होता है promoter pledge. How many of you are aware of this? If you all can let me know in the chat box. How many of you all understand this term pledge? If you all can let me know in the chat box. एक होता है आपका promoter holding. क्या होता है कंपनी में? Obviously promoter is nothing but the owner of that company. ओ कभी कभी क्या करते हैं ना कि प्रमोटर प्लेज रखते हैं. प्लेज मतलब इट्स नथिंग बट योर कोलैटरल. कोलैटरल मतलब जैसे हम लोग बैंक्स में जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो बैंक वाला बोलता है ठीक है हम लोन तो देंगे बट सामने आपको एक सिक्योरिटी गिरवी रखना पड़ेगा. एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ कोलैटरल. So what they do is promoters, a percentage of their holdings, they keep their shares as collateral. So let's say if they are taking a loan from a bank, this is a bank here. So banks will extend loans and the shares will be held as collateral. So अगर मान लो अगर बैंक ने लोन दे दिया है तो जब तक उनका रीपेमेंट चल रहा है, सो बेसिकली बैंक के लिए भी एक गारंटी है कि ठीक है अगर कल कोई प्रमोटर डिफॉल्ट करता है तो बैंक्स को तो अपना पैसा रिकवर करना है, तो क्या करेंगे, जो शेयर्स है उसको बेच देंगे और अपना पैसा रिकवर कर देंगे. नाउ ऑलवेज लुक, सो हैविंग अ प्लेज इज नॉट अ रेड फ्लैग कि प्लेज होना ही नहीं चाहिए. I mean it's a legal way. I think promoters अपना शेयर्स गिरवी रख के लोन्स ले भी सकते हैं. बट वो देखना कि ये जो प्लेज का जो परसेंटेज है वो हर क्वार्टर बढ़ते नहीं जा रहा है. कि मान लो अगर एक प्रमोटर है जिसका एक होल्डिंग 55% है और मान लो उसका जो प्लेज है दैट इज अराउंड 2%. सो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या नौबत आ गई प्रमोटर क्योंकि उसको लोन लेना पड़ा और प्लेज रखना पड़ा अपने शेयर्स को. एंड वेयर इज दैट लोन मनी यूज्ड फॉर? वो लोन किसके लिए लिया है? द पर्पस ऑफ दैट लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. केपेक्स के लिए किया है या कुछ डेट्स रीपे करने के लिए लोन लिए हैं. फॉर व्हाट पर्टिकुलर रीजन हैज द लोन बीइंग टेकन एंड व्हाट वाज द नीड टू ऐसा क्या नौबत आना पड़ा कि ये प्लेज रखना पड़ा अपने शेयर्स को. नाउ द बिगेस्ट रिस्क इज 2% अगर मान लो नेक्स्ट फिर से 4% होता है, फिर 5% होता है, तो अगर आपका प्लेज बढ़ते ही जा रहा है एंड इफ यू सी दैट द कंपनी has been piling up debts but is not able to get revenue, so at a period of time if you feel एक हो सकता है कि एक spot of bother में आ सकता है कंपनी, बिकॉज अगर डेट पाइल अप कर रहे तो दैट डेट शुड गो इनटू दैट बिजनेस एंड बिजनेस से आपका रेवेन्यू और आपका प्रॉफिट और आपका कैश फ्लोज ये बनना चाहिए. नहीं तो इट विल बी अ केस ऑफ आई थिंक यू ऑलरेडी नो व्हाट हैपेंस. हाँ, अगर कोई कोई प्रमोटर्स प्लेज रखते हैं एंड व्हाट दे डू इज पूरा लोन को रीपे करके प्लेज उनका जीरो हो जाता है. इफ दैट हैपेंस देन इट्स अ गुड साइन. बट ऑलवेज जब भी आप प्रमोटर देखते हो तो देखना कि कोई प्लेज तो नहीं है. अगर प्लेज है तो क्या पर्पस के लिए लोन लिया है. अगर लोन लिया है तो क्या ट्रेंड्स रहा है, उनका डेट क्या रहा है, वेदर दे हैव बीन एबल टू एफिशिएंटली जनरेट रेवेन्यूज, मोर रेवेन्यूज
क्या उनका रीपेमेंट टाइम पे जा रहा है, कुछ डिफॉल्ट तो नहीं है, बिकॉज अगर डिफॉल्ट होगा तो बैंक ये जो शेयर्स है वो बेच देंगे यहाँ पे. सो आइडियली वन प्रेफरेंस इज मे बी लुक फॉर कंपनीज जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग एकदम क्लीन हो, मतलब कोई प्लेज नहीं हो, या अगर प्लेज हो तो देखना कि आर दे मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट टू रिड्यूस द प्लेज, या ये प्लेज मतलब 2% 3% बढ़ते नहीं जा रहा है. अगर प्लेज बढ़ रहा है, इतना ज्यादा लोन्स क्यों ले रहे कंपनीज, वो भी हमें देखना पड़ेगा. अगर लोन्स ले रहे तो क्या वो रीपेमेंट कर रहे टाइम पे. रीपेमेंट कब कर सकते हैं, जब उनका धंधा अच्छा चल रहा हो. अगर कोई एक मेजर इवेंट आ गया जैसे कोविड आ गया, या बिजनेस चल नहीं रहा है, या इंडिया यूएस ट्रेड डील के वजह से लॉट ऑफ बिजनेस है जो अटका हुआ है, हैवी बिजनेस है एग्जैक्टली, जो केपेक्स हैवी बिजनेस है ना उसमें. सो वी ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ नेम्स, स्पेशली आपके एविएशन इंडस्ट्री में हो गया, या आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो गया, या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में हो गया, जहाँ पे हैवी केपेक्स रिक्वायर्ड है, स्पेशली वो इंडस्ट्रीज में यू शुड ऑलवेज सी कि प्रमोटर का क्या हिस्ट्री है. बेसिकली अगेन इट बॉइल्स डाउन टू रेवेन्यू एज वेल, कि बिकॉज अल्टीमेटली अगर ये रीपे नहीं हुआ, देन आई थिंक वो उनका प्लेज, बैंक विल इन्वोक दैट प्लेज एंड दे विल सेल ऑफ दैट शेयर्स एंड दे विल रियलाइज देयर मनी. और जैसे जेंसॉल का केस हुआ था बीच में, आई थिंक जेंसॉल, आई थिंक दे हैड अ लॉट ऑफ डेट इन देयर बुक्स, अल्टीमेटली दे वर नॉट एबल टू पे, and even the share price also tanked after that. I think the same thing happened with Kingfisher. We have numerous examples like that. So always ensure that आप जब भी आप देखते हो ऐसा प्रमोटर के पास जाना, कि पर्पस ठीक है, रीपेमेंट अच्छा है, रेवेन्यूज आ रहे हैं तो ठीक है. हैविंग अ प्लेज इज नॉट, आई मीन इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैव अ प्लेज, but see whether they are making a conscious effort to reduce their pledge and probably repay off their debts as well. Okay, so this is also one particular factor that you can look into. Now let us start off with our Q&A. I think Kalyani ma'am is asking, Balbir ji भी पूछ रहे कि कौन सा indicators use करना चाहिए. So guys, what I've done is, अगर आप SBI Securities के YouTube चैनल में जाओगे ना, वहाँ पे आपको एक लाइव टैब दिखेगा. तो यहाँ पे ना मैंने काफी सारे इंडिकेटर्स का मैंने एक वेबिनार लिया हुआ है. So you will find a webinar on moving average, you will find a webinar on RSI, you will find a webinar on ADX, that is your average directional index. You will find a webinar on Bollinger Bands, कैसे use करते हैं. You will find a webinar on stochastic indicator क्या होता है. You will find a webinar on VWAP as well, कि VWAP कैसे यूज होता है. सो यू विल सी ये जो मेजोरिटी 1 2 3 4 5 6 ये पूरे 6 इंडिकेटर्स इसको कैसे यूज करते हैं, इसके अलग अलग टेक्निक्स क्या है यूज करना. ये सारे वेबिनार्स आपको एसबीआई सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे. इन टर्म्स ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स, आई थिंक आरएसआई इज अ गुड इंडिकेटर. कल्याणी मैम, इफ यू गो टू दैट, अगर आप वेबिनार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा बॉलिंजर बैंड्स कैसे यूज करते हैं. ठीक है. Yeah, I think good. We have done a webinar on ABCD as well. Yes, exactly. ABCD भी है. Good. I think तो 7 वेबिनार हो गए, बोलो. So अभी करेंगे आगे जाके, we will add super trend as well. So I think इतना indicators का I think knowledge होना important है. I mean that is more than enough. LG Electronics मेरे जी avoid ही करना. See, I think well, it is seeing some pullback from the lows here, but I feel this level is important, 1570. I think till the time we don't move above 1570, I think it's better to avoid for now. Vimta Labs, nahi avoid. I mean, it's can't call this as a trend reversal. I think it's better to avoid Vimta Labs because ये जब तक 535, 540 cross नहीं करता है, तब तक the overall trend is likely to remain bearish. Sir, having a very high promoter holding, consider, I mean not really, because अभी तो limit आ गया ना, 75% तक promoter अपना holding रख सकता है. But again, having a high promoter holding is also dicey because that can probably lead to a
lot of manipulation by the promoter, because promoter के पास इतना heavy है. I mean, that is also a slight thing to worry, because I think it will be promoter will probably decide on his own क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. I think that can probably manipulation का chances काफी बढ़ जाता है, especially with a high promoter company. It could be a balanced of promoter holding, FIIs, DIs holding, as well as retail holding. Usually retail holding तो कम ही होगा, but I think tomorrow we'll also look at how to look at FII trends as well. So tomorrow कल के session में हम वो देखेंगे. So extremely high promoter holding, let's say 85-90%, उतना भी नहीं चाहिए, but maybe if it's somewhere around 55-60-65%, that's okay, because ultimately promoter will have majority of the shares, but इतना भी high नहीं होना चाहिए कि बाकी किसके पास shares बचता ही नहीं है. So I think you can look at that as well. I think there is one video that I made on candlestick patterns. Position sizing के ऊपर मैंने stop loss कैसे use करना है उसके ऊपर भी मैंने video बनाया, आप देख सकते हो. Just go through that SBI Securities YouTube channel, guys. I mean, आपको 62 वीडियोस मिल जाएंगे सिर्फ अलग अलग टॉपिक्स के बीच जो मैंने लिए हुए हैं. बाकी my colleagues have also taken these webinars here. You will have at least 15-20 option strategies. There'll be at least 15-16 trading के ऊपर, stop loss के ऊपर, option chain के ऊपर, another 7-8 of indicators. So you will have a lot of variety there. So, and it will be a good value add. ठीक है, Sterling Wilson. Okay, just a second. I think मेरा trading view hang हो गया है. हाँ, Sterling Wilson. Let me. I mean, too early to call this as a trend reversal. बलबीर जी, baby एक downward sloping trend line breakout आया है, but we'll wait for a couple of more. At least let's wait for it to cross about 220, because अगर 220 के ऊपर जाता है, then chances are that it needs to hold about 200, 203. I think as long as it holds above this level, chances are that it can continue moving higher. Oil India, I think avoid थोड़ा सा weakness है. It's below, it's near its 50-day EMA. I think below 450 it can fall even further. I think I would say avoid Oil India. NMDC भी थोड़ा avoid करना है यहाँ पे, because so फिर से 85-86 के ऊपर जाना चाहिए. I think if it breaks below this zone, I think below 77.5, then I think we can expect more weakness here. Max Health, good, but I think एकदम strict stop loss से maybe around 1040, 1045 is where you can have a sell. अभी फिलहाल के लिए IT में invest मत करना, avoid IT. Guys, go with the trending sector. आपको ऐसे सेक्टर पे क्यों करना है? आपको मतलब अगर आपको चाकू ले रहा है आपके छाती पे तो आप ले सकते हो. मतलब एक आईटी सेक्टर भले एक रिकवरी आया है पिछले 2 दिन से आईटी इंडेक्स में, बट एक इंडेक्स जो ऑलमोस्ट 20% गिर गया है, थोड़ा सा और उसमें स्टेबिलिटी साइंस आने दो, and then maybe we can enter. But there are a lot of sectors that are trending, like PSU banks है, consumer durables है, there is infrastructure, there is manufacturing. Be with a trending sector. Your trend is your friend. आपका टेक्निकल का ये मोटो है, आपका ट्रेंड आपका दोस्त है. आईटी आपका ट्रेंड अभी फिलहाल आईटी इज नॉट योर फ्रेंड, बिकॉज द ट्रेंड इज अगेंस्ट योर फेवर फॉर नाउ. तो जब आपका ट्रेंड साथ में रहेगा, आप ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करोगे, इट विल बी beneficial. I mean 1040, 1045, that is where the support is placed for Max Health. Sudhakar ji sir, weekly once kindly take a class on AI and using prompts for technical and fundamental. It's a request. Sure, I'll consider that. I mean, it's a good thing. But for that, even I need to learn the prompts first, Sudhakar ji. I think once I do that, I mean, definitely we will have the prompts for technicals and fundamentals. But let me see if I can, have one session on that same. But then I have to use at least AI tools.
So ठीक है, we'll let me figure that out. I think it's a good idea. We'll do that. यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस नहीं, आई थिंक भले ही आज एक बड़ा कैंडल बना है, ये देखो ऑलरेडी आज स्टॉक 17% ऊपर है. आई मीन टू अर्ली टू से दिस अ ट्रेंड रिवर्सल. मतलब ये देखो, ये 156 से 95 गिरा, अब 115 हो गया. आईटी इंडेक्स का भी कुछ ऐसा ही कहानी है, गिर के एक थोड़ा सा रिकवरी आया है, बट बोल नहीं सकते कि ये ट्रेंड रिवर्सल होगा कि नहीं. क्यों पता है? अगर आपको देखो, एक आईआरएफसी का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ. आईआरएफसी में क्या हुआ था, बड़े लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के बाद ऐसे लगा था कि चलो अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा, अब ऊपर जाएगा. ये देखो क्या हो गया, पूरा ब्रेकआउट यहाँ पे फिजल आउट हो गया. सो अगर हमें यहाँ पे लगा कि चलो एक बड़ा कैंडल बन गया 10%, यहाँ पे 3%, चलो हम यहाँ पे ले ले. अगर यहाँ पे आप एंट्री भी, मतलब इवन इफ यू हैड टेकन अ चांस, यू वुड हैव केप्ट अ स्टॉप लॉस अराउंड 120, तो आपका एसएल हिट होता. सो इफ यू वांट टू टेक दैट चांस, गो विद अ स्ट्रिक्ट एसएल. दैट इज व्हाट आई वुड से. 2 to 3% एसएल, उससे ज्यादा एसएल आप मत रखना, बिकॉज यू नेवर नो, अगर ब्रेकआउट फेल हो जाए, एकदम से नीचे चले जाए, देन इट कैन बी डिफिकल्ट. बीएससी ये देखो फॉलो थ्रू मूव नहीं है. आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड बीएससी फॉर नाउ चंपत जी. थोड़ा सा इसको स्टेबल होने दो. बीएचईएल, इनफैक्ट ऑल रेलवे स्टॉक, राकेश जी. बीएचईएल पूछा ना आपने, कहाँ पे आपका क्वेरी? हाँ बीएचईएल, हाँ बीएचईएल. I think, see, it's near its 200 EMA. It's around 250, 255. I think 255 is a strong support. The previous two times it managed to hold above its 200 EMA. But I think if it falls below 255, then I think BHEL can come under some pressure. PNB is good, but I feel Union Bank and Bank of Baroda are better names in PSUs compared to PNB at this point. ITC avoid कर रहा है. ITC मुझे वही लग रहा है. I think ITC, it's like a falling knife. See, long-term prospects can be good for ITC, but the trend has not really, reversed in ITC, guys. अगर आपको लेना है ITC at this level, I mean, a lot of people might say it's a value pick. चलो ITC का फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं हम लोग. क्या लग रहा है ITC का फंडामेंटल्स? Industry P is 43.8, stock P is 19, obviously, because stock has kind of tanked a lot. So आपको value दिखेगा, P ratio. Very good ROC, 36.8%. ROE is very healthy, 27%. PEG ratio comes at 2.16. Price to book, I feel slightly higher, but we'll have to compare with the peers, 5.73. EPS is also very healthy, 28 ka EPS hai per share. Look at that sales number, 79,000 crores, 20,000 crores of profit. Too good. Sales growth, but I mean, this is the problem now. I think with FMCG companies, their top line has kind of plateaued now. I mean, you won't see more than 8 to 10% growth in their top line, and profit has grown at 5% CAGR for the last 5 years. See, but it's like these companies are like your big elephant. मतलब इतना मार्केट शेयर है, इतना उन्होंने कब्जा कर लिया है कि अब और कितना ग्रोथ आएगा यहाँ से. Because market looks for growth here. I think 5% is what ITC has grown. If you look at PNL, look at that. Sales numbers, 60, 70, 67, 75,000. I mean, this year on TTM is around 79. Operating profits are extremely healthy, 34, 36. You won't see these kind of numbers with a lot of companies. I mean, that itself shows, I think ITC, it's a giant. And it's just that with that, cigarettes का भाव भी बढ़ गए. I think 17 रुपया का पैकेट, I think 24 हो गया. I think some of my friends were saying that in office today. So I think that new duties have kind of kicked in. If you look at EPS has also kind of grown. Tax, net profit 20,000. Look at that, 35,000 crores of bottom line. Too good. And from 9,000 they have gone to 20,000. मतलब roughly उन्होंने 10 साल में डबल कर दिया उनका profit, which is too good. Good healthy reserves as well, 68,000 crores of reserves. Look at their operating cash flows. कोई कंपनी में ऐसा cash flows दिखेगा आपको?
14,000 करोड़, 15,000 करोड़, 18,000 करोड़, 17,000 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है ये कंपनी में. It's good. I think ITC is more of a sentiment driven fall. I don't think fundamentally there is anything wrong with ITC. ICICI AMC, I think HDFC AMC could be a better one compared to, I think HDFC AMC better lag raha hai compared to ICICI AMC. Bail probably office, yeah, yes, absolutely. Yeah, ITC and all these are all good dividend paying companies. Okay, I'll just take one last talk. Indus Tower. Indus Tower is good. I think as long as it stays above 450 mark, the overall trend is likely to remain positive. Okay, so I guess that's all from today's mid-market session. I hope it was informative. And I'll see you tomorrow at 12:30 on SBI Securities YouTube channel. Until then, bye guys. Take care. Stay safe. And I'll see you all soon. Take care, guys.